everybody, welcome to Geography Core, and in this short video we are going to quickly summarize the geography of Madhya Pradesh. So basically here we will try to sum up all the geographic features of the Indian state Madhya Pradesh. So population wise it is the fifth largest state of the country and area wise ये second position पर आता है. Okay. So it is the second largest state of the country area wise. Total districts in the state are 55. Population density की बात करें तो that is 236 persons per square kilometer. Okay, literacy rate यहाँ का है 69.32% and the smallest district of the state is निवारी. वहीं पर largest district है छिंदवाड़ा. Okay. Talking about the location and boundaries, so on the map of India you can see over here this is where Madhya Pradesh is located, and it is giving the idea that it is located in the center of the country. So the state is located in the center of the country and it is bordered by 5 states that includes Uttar Pradesh, Chhattisgarh, Maharashtra, Gujarat and Rajasthan. Next हम बात करेंगे about the physiographic division of Madhya Pradesh. So that includes Vindhyan Plateau and Hills, Satpura Range, Malwa Plateau and Bundelkhand region. सो जो स्टेट का मेजर पार्ट है, जो सिग्निफिकेंट पार्ट है, दैट इज़ कवर्ड बाय विंध्यन प्लेट्यू एंड यहाँ की टोपोग्राफी काफ़ी वेराई करती है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड ऑल्सो इट इज़ अ रीजन विद रिच मिनरल डिपॉजिट्स. ओके, सतपुरा रेंज की बात करें तो दैट इज़ इन सदर्न पार्ट ऑफ द स्टेट जहाँ पर डेंस फॉरेस्ट मिलेंगे एंड रिच बायोडाइवर्सिटी. मालवा प्लेट्यू सिचुएटेड इन नॉर्थ वेस्ट and it is known for its fertile soil. Other than that soil fertile है तो obvious सी बात है कि agricultural productivity भी अच्छी होगी. Okay, बुंदेलखंड region की बात करें तो that is in northeast and it is characterized by rugged terrain and limited water availability. Major rivers in this state are Narmada, Tapti, Chambal, Betwa and Ken. क्लाइमेट की बात करें तो यहाँ पर क्लाइमेट सब ट्रॉपिकल है वेयर वी विल फाइंड हॉट समर्स. विंटर इतनी ज़्यादा नहीं होती, इतनी हार्श, सो वी विल फाइंड माइल्ड विंटर्स विथ सीजनल रेनफॉल. एवरेज रेनफॉल जो है अलग अलग रीजन में वेराई करती है, जहाँ पर ईस्टर्न रीजन में वी विल फाइंड मोर रेनफॉल दैन द वेस्टर्न पार्ट. नाउ सॉइल एंड एग्रीकल्चर की बात करें तो इन मध्य प्रदेश सिग्निफिकेंटली हमें ब्लैक कॉटन सॉइल देखने को मिलेगी and also it is a region with mixed soil types, लेकिन majorly we will find black cotton soil, so which is also a very fertile soil है ना. alluvial soil हो गई, black soil हो गई, ये fertile lands होती हैं, fertile soil होती हैं. so it is a fertile soil which is suitable for agriculture with major crops including wheat, soyabean, pulses and cotton. ठीक है. and the Malwa region is known for its agricultural productivity with a focus on wheat, soyabean and pulses. So the Malwa region of the state is agriculture rich region. Next we will talk about forests and biodiversity. So state का 25% area forest cover करते हैं with dense forest in Satpura range. Okay, and overall state में 12 national parks हैं, 24 wildlife sanctuaries and 3 biosphere reserves, which includes the famous ones as Kanha National Park and Bandhavgarh National Park. Then talking about its economic importance, so it is a significant contributor to the state's economy with soyabean and wheat being major crops. तो मध्य प्रदेश मेजरली प्रोड्यूस करता है सोयाबीन एंड व्हीट को, which adds to the state's economy. Other than that, mining, cement and textiles are prominent industries in the state with a growing focus on tourism and IT sector. तो यहाँ पर ज़्यादा मेन फोकस किया जा रहा है ऑन टूरिज्म एंड IT सेक्टर्स. अदर देन दैट हमको माइनिंग, सीमेंट एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज भी देखने को मिलेंगी. एंड यस, दैट्स इट फॉर द क्विक समरी ऑफ ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश. आई होप इट हेल्प्स. Thank you so much for watching. Do like the video, subscribe to my channel and share among your friends. जाना नहीं